On National Science Day, we honored Sir C.V. Raman by bringing the Raman effect into classrooms through a simple, hands-on demonstration. Using a laser beam and a glass of water, students witnessed how light interacts with matter. A Nobel Prize-winning discovery became a visible and real classroom experience. लाइट आपका होता है जो भी इसके अंदर द्रव में कोई चाहे मिलावट नहीं है ना, ये तो क्लीन है, ठीक है। इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, द्रव के जो कण है वो बने नहीं है ना इसमें। और जब हम इसमें मिलाते हैं क्लियर वाटर में, तब इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ना। जो छोटे छोटे कण है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इसके साथ आपका अवरोध बन जाती है इसके लिए, है ना। तो अब इसमें लाइट आते हैं तो સૌ પહેલા આપણે પ્રયોગમાં શું છે, આપણી પાસે આ પાણી છે, બરાબર। मतलब કાચના બીકરની અંદર આપણે શું કરેલું છે, શુદ્ધ પાણી ભરેલું છે, બરાબર। હવે પાણીની અંદર કેવું છે, તમને નાના નાના કણ દેખાય છે? હા દેખાય છે। ક્યાં દેખાય છે? નથી દેખાતા? હા છે જ નહીં। તો આની અંદર આપણે નાના નાના કણ દેખાતા નથી, કેમ કે આમાં નાના કણ હોય જ નહીં, બરાબર, બહુ બારીક હોય। એટલે આમાંથી આપણે પ્રકાશનું કિરણ પાસ કરીશું આ લેઝર લાઇટની મદદથી, તો શું થશે, આર પાર નીકળી જશે, બરાબર। શું થશે, સીધી રેખામાં मतलब પ્રકાશનું કિરણ આર પાર થઈ જશે। તો આપણે પહેલા એ કરીશું। તો આપણે પ્રયોગમાં શું કર્યા, સૌથી પહેલા આ જુઓ, પ્રકાશનું કિરણ આર પાર પાસ થઈ ગયું, બરાબર ને। દુધિયા કલર તો થઈ ગયો ને, દૂધનો કલર દુધિયો કલર, દુધિયા કલરનું પાણી થઈ ગયું, બરાબર। હવે આને આપણે શું કરવાનું છે, થોડું મિક્સ કરી દઈશું, मतलब પાણીને આપણે સરખું પહેલા મિક્સ કરવું પડશે ને, દૂધ ને પાણી બંને। હા, તો હવે આપણે પાણીને સરખી રીતે મિક્સ કરી દીધેલું છે। હવે શું કરીશું કે આ જે દૂધવાળું પાણી છે એમાંથી શું કરીશું, પ્રકાશનું કિરણ પાસ કરીશું। તો જો આપણે કરીએ છીએ, દૂધની અંદર નિલંબિત કણો હોય, નાના નાના કણો હોય, બરાબર। તો જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ એ નાના નાના કણો પર પડે છે, બરાબર, ત્યારે શું થઈ જાય, પ્રકાશ વિખેરાઈ જાય। શું થાય, પ્રકાશ આ દ્રાવણની અંદર વિખેરાઈ જાય। Alongside this demonstration, students also engaged in a range of hands-on experiments and science activities, showcasing their curiosity, creativity, and understanding of scientific concepts through practical learning. ये पाण्यात छोडले चालणारी मोटर लावलेली, बॅटरी लावलेली आहे आणि कनेक्शन लावलेलं आहे आणि बॉटलने मी हे बनवलेले आहे, त्यामुळे हे पाण्यात बुडू शकत नाही आणि तरंगू शकतं। ह्याच्यामुळे हवेने ते पुढे जातं करून दाखव। On a larger scale, these subsystems can reduce the air pollution and protect the environment. Be the solution, not the pollution. If you care the air, if you care air, clean the air. Choose and keep the air clean. We are very glad to stand here and express about this problem. নমস্কার, আমি শ্রীজা গুহ, আজকের আমি উদ্ভিদ কোষের উদ্ভিদ কোষের মধ্যে সামনে মুখটা দিই, আরেকজন ধর না, ওকে উদ্ভিদ কোষে আমরা এই যে ছোট ছোট ব্ল্যাক কালারের দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে বলা হয় রাইবোসোম। তারপরে আমরা 2 নম্বরে লাইসোজোম দেখতে পাচ্ছি, যে পার্পল কালারের যে ছোট ছোট দেখতে পাচ্ছি, এগুলোকে লাইসোজোম বলা হয়। তারপরে এর প্রধান মানে উদ্ভিদ কোষ বা প্রাণী কোষ, এই কোন কোষেরই প্রধান যে অংশ সেটি হলো নিউক্লিয়াস। এখানে আমরা তারপরে নিউক্লিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি থার্ডে, এই যে এটা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের পরে নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে নিউক্লিওলাস। নিউক্লিওলাসে আমরা এখানে যে নিউক্লিওলাসের ভেতরে নিউক্লিওলাস থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে
জিনকে আমাদের জিনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বজায় রাখে। তারপরে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া, যেখানে আমরা 5 নম্বরে এই যে রেড কালারের মাইটোকন্ড্রিয়া গুলো দেখতে পাচ্ছি। এই মাইটোকন্ড্রিয়া গুলো হচ্ছে আমাদের লিপিড প্রোটিন, এই তিনটে লিপিড প্রোটিন এই দুটো উপাদান দিয়ে তৈরি হয়। आमच्या कॉलेजचे नाव होलोग्राम प्रोजेक्ट. होलोग्राम ही प्रकाश लहरी रेकॉर्ड करून आणि पुनर्बांधणी करून तयार केलेली एक त्रिमितीय प्रतिमा आहे जी चष्म्याशिवाय खोली आणि दृष्टिकोन दाखवते. होलोग्राम प्रोजेक्ट ही एक प्रगत तंत्रज्ञान प्रणाली आहे. होलोग्राम याचा शोध 1948 मध्ये डॅनिस गॅबर यांनी लावला होता. माझे नाव चिन्मयी महेश शेरवडे. आम्ही केलेल्या प्रयोगाचे नाव आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेट. त्याच्यात मला प्रयोग करण्याचे सामान 10 सेंटीमीटरचा खिळा, 1 मीटरची तांब्याची वायर आणि खिळा आणि दुसरी बॅटरी. ही तांब्याची तार आपण ह्या खिळ्याला या प्रकारे गुंडाळून घ्यायची आहे. ही बॅटरी ह्या तांब्याच्या 2 जोडवांना जोडायची आहे. ह्या 2 जोडवांना जोडल्यानंतर ह्या खिळ्यामध्ये इलेक्ट्रिक मॅग्नेट तयार होतो. हा खिळा एखाद्या मॅग्नेट सारखं काम करायला लागतो. This day was not only about remembering a discovery, it was about inspiring new ones by nurturing scientific temper, encouraging curiosity, and empowering students to explore with confidence. Science is nothing but logical thinking, a way of logical thinking, reasoning, memorization, and remembering, and medicines to cure diseases. Everything depends upon science.